Hi friends, how are you doing today? I'm Ramandeep Singh and you are watching YouTube channel IELTS Coaching. Here I try to help you in your IELTS preparation in every possible way. और आज का जो वीडियो है वो है about the IELTS reading module. इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन टाइप्स आते हैं और उनमें से एक है fill ups, fill in the blanks. This type of question actually have three types. एक टाइप वो रहता है जिसमें पूरे पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स हैं वो स्कैटर्ड रहती हैं एंड एट एन एवरेज आपको एक पैराग्राफ में एक आंसर मिलता है. पहले पैराग्राफ से पहला आंसर मिलता है और एज यू मूव ऑन यू कीप ऑन गेटिंग द आंसर्स. Another one is जहां पर ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे क्योंकि एक पैराग्राफ में से वो पीस लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म और अ प्रोसेस ऑफ अ मशीन. नाउ ये पूरा पीस एक ही पैराग्राफ में से लिया जाएगा एंड यू विल find all the answer in that particular paragraph. So obviously it makes it much easier because you don't have to look for the answers throughout the paragraph. और इसकी थर्ड टाइप जो इसकी सबसे मुश्किल टाइप है, once again you will find the answers in different part of the paragraph and for your ease there would be a box जिसमें आपको कई सारे options भी मिलेंगे. इजी होने के बावजूद भी ये मुश्किल हो जाता है because you have to look at these synonyms in the paragraph. The word would be there but in the paragraph you would find a synonym. For example आपको दिया जाएगा process and paragraph में आपको मिलेगा procedure. बहुत सारे ऐसे words रहते हैं जो हमें पता होते हैं so they don't trouble but there are other words that can give you some trouble which are uncommon. But for all these three different question types of fill-ups, one trick works and that is step 1, you have to read the question thoroughly. Understand what the statement means and what word is missing. Number 2, justify to yourself or identify the part of speech it is. कि वो noun है, verb है, adjective है, adverb है. Number 3, look for the one word prior to the blank. The, a, ऐसे words होते हैं, obviously noun होते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन ये आंसर ढूंढने बहुत इजी हो जाते हैं क्योंकि पैराग्राफ में भी वहां पर ए जहां पर लिखा उसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आंसर बन जाता है. I must say it's not going to happen all the time but there are lots of chances that you can find the answers in this way. Now as I said, step 1 is read the statement thoroughly and understand it, and step 2 is identify the part of speech. Now step 3 is move into the paragraph keeping the keywords in mind. Read only that paragraph and that one statement जहां पर आंसर होगा. अनवांटेड आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है और उस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल टेल यू दैट दिस इज एक्चुअली द आंसर क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच भी मैच करेगा, स्टेटमेंट की सेंस के साथ भी मैच करेगा, चाहे वो ऐसा वर्ड ही क्यों ना हो जिसका आपको मीनिंग भी नहीं पता. आई मस्ट टेल there can be some nouns with ending tion that can be new to you जो आपने कभी पहले सुने ना हो. फॉर एग्जाम्पल excursion, बट अगर वहां पर द लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है और पैराग्राफ में भी कुछ ऐसी ही सेंस नजर आ रही है, अगर आप ये वर्ड फिट कर भी देंगे तो भी चांसेस वुड बी वेरी हाई कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो. अभी मेरे पास है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइजेस फेच फ्रॉम डिफरेंट रीडिंग टेक्स्ट पैसेजेस. आपको उतना ही सेक्शन रीड करने को मिलेगा जहां पर आंसर हो सकता है. थॉरली क्वेश्चन को रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए द पार्ट ऑफ स्पीच, देन रीड द पैसेज, hit the keywords and look for that word, and later I will share the answer with you. This is a wonderful way of improving your reading and understanding different question types. I hope my videos are helping you in your IELTS preparation. Don't forget to subscribe the channel and share my videos with others. You must also share your score in the comments that how much you got correct in this particular exercise. I hope you are well aware कि अभी हम IELTS का ऑनलाइन कोर्स भी रन कर रहे हैं. उसका नाम है लॉकडाउन सीरीज जो अवेलेबल है IELTS कोचिंग एप्लीकेशन पे. आप चाहें तो किसी टाइम भी इस कोर्स को बाय कर सकते हैं and start practicing at home. It will help you to improve all the 4 modules of IELTS and help you to target 7 bands. It is both for academic as well as GD students. The link is in the description. Let's start today's exercise.
Hi friends, how are you doing today? I'm Ramandeep Singh on your favorite channel, IELTS Coaching. Obviously, because of Corona, your IELTS preparation is affected. And the solution is very easy. My 2 weeks short IELTS introductory course, those with a target of 6 or 6 plus bands can definitely take benefit of this course. इन ट्यूटोरियल्स को डे बाय डे फॉलो करते आप नेक्स्ट 2 वीक्स में अच्छे से अपनी आइल्स प्रिपरेशन कर पाएंगे. Those who already have an idea of IELTS but they are not getting their desired bands, it is a wonderful opportunity for them to learn with me. And this course would be divided in day 1, day 2, and the day you join, आप अपना day 1 मान के चलिए and day 1 के tutorials को follow करना शुरू कीजिए, and for next 2 weeks you will be learning